Hello everyone, welcome to Careerflite. Welcome to our UGC-NET classes. So this is a continuation of our topics, that is research aptitude we have started, and we have already seen different types of research, and on that basis we are going to do our next topic, that is steps of research as of for today's class. Before that, there's a crash course for UGC-NET to the December 2023 exam in a very discounted price. Online classes on offline classes are available. You can also go through our app, that is Careerflite. Okay, so now we'll start our topic, the steps of research. Okay, steps of research, basically there will be two or three classes for steps of research. First, today we'll understand the basic, just an overview. Step 1, which basically goes for formulation of research problem. Step 2, extensive literature survey, development of working hypothesis, research design, sampling design, data collection, then the next part, that is your report making, last step. Okay, so first we'll understand the formulation of research problem or identifying a research problem. This is the first basic step when you want to conduct a research, to identify a research problem. And how we do it, let's say we choose a topic which is of the researcher's interest. Okay, the topic should be of your interest, otherwise basic sources and the writing of your report will not be proper. So the topic that you are choosing should be of your interest or the researcher's interest basically, and from that topic you need to make subtopics again. Okay, let's say if you want to choose your topic as women empowerment, this is the topic for research, then you need to divide it into different portions. Now women empowerment carries a different lot of aspects, so from there you have to choose one particular aspect, let's say in which portion you want to work. That is your choosing of subtopic, and now you need to make a list of questions. After that we'll make a list of questions, and that list of questions, you will see whether some of the questions has been answered earlier or not. Okay, those questions which has not been answered earlier, that can be one of your problem, that can be one of your issue. So in that manner this step will be completed. This is the first step we know, and also the most significant step in your research process, that is to identify a problem, choosing a topic, then divide it into different subtopics, and from those subtopics also, so any topic which is of your concern, then you will make list of questions, probable questions which are answered earlier, and the questions which are not answered earlier. You will see that, and from there you will decide which will be your problem or which one will be your issue. Okay, your issue should be such type of topic or such type of problem that could be generalized, the conclusions could be generalized, that it can be applied to the masses also. It should not be like specific once for like if you're doing a research, that should be generalizable, that means it should be applicable to the masses. It should not be like that one person we can apply but the other person it will vary, the results will vary. It can't be like that. So these are the thing for the first step. Next step after identifying a problem is to do the extensive literature survey. This one, extensive literature survey means whatever topic you have chosen, what are the resources that are available on your topic, what are the textbook journals that are available on your topic, you will go through them in detail. You will see whether something, the issue that you have chosen, whether someone has written about that issue or not particularly, to for this reason, and also to choose the resources properly, what type of methods or what type of resources you are going to choose. This we can do by completing the step 2, that is extensive literature survey. Okay, today we're going to discuss about these three steps. Okay, next class we'll discuss about these three different types of research design. We'll discuss sampling techniques, and what are the different types of sampling procedures, and also about data collection. This, okay, let's complete step 3 again, development of working hypothesis. Now we'll understand what is a hypothesis. Hypothesis is basic a tentative statement. It is a tentative statement without any kind of evidences. Remember, it's a proposition actually. Okay, hypothesis जैसे कि आपका assumption है, एक proposition है, it's a tentative statement, does not have any kind of evidences. यहाँ पे कोई evidences नहीं, आप जब assume करते हो सिर्फ by looking over the means related data,
एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे करने के बाद आप एक डेटा जो है वो प्रेजेंट देखकर आप एक प्रपोजिशन करते हो, एक टेंटेटिव फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट बोलते हो कि दिस मे बी द पर्टिकुलर कंक्लूजन, ठीक है। एंड हाइपोथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक रिसर्च, इट इज काइंड ऑफ मैंडेटरी इन साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए आपका हाइपोथेसिस, टू मेक अ हाइपोथेसिस और फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट for other, that is for scientific research, facts and evidences are required. So यहाँ पे हाइपोथेसिस आपको बनाना है और उसी हाइपोथेसिस को बाद में टेस्ट भी करना है एंड उसके बेसिस पर आपको कंक्लूजन्स और रिजल्ट्स बनाने होते हैं, ठीक है। सो दिस इज अवर थर्ड स्टेप। हाइपोथेसिस डिफरेंट काइंड्स के हैं, उनमें से दो इंपॉर्टेंट जो है नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये दो हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फर्स्ट वन दैट इज नल हाइपोथेसिस, second one is your alternative hypothesis, or this is also known as the research hypothesis, okay। how does it differs? null hypothesis में आप ये statement देते हो कि that there is no relationship between two variables or more than two variables, उनमें कोई relationship नहीं है, ठीक है। और इसी चीज को आपको establish भी करना है लास्ट में in your report, in your conclusion, by the facts, by data analysis properly, ठीक है। और जब आपका null hypothesis लेट्स से फॉल्स निकला हो आपका जो आपने हाइपोथेसिस बनाया, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। जो रिसर्च हाइपोथेसिस है आपको उसको एक्सेप्ट करना है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपका नल हाइपोथेसिस नहीं निकला है आफ्टर द डेटा एनालिसिस, इट विल बी योर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस which will be proven that there is some kind of relationship between the variables, okay। सो इसको हम और अच्छे से समझेंगे नल और ऑल्टरनेटिव प्रॉपरली। एक हाइपोथेसिस का हम एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम हाइपोथेसिस को समझेंगे, क्योंकि अभी हम स्टेप्स कर रहे हैं। सो नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड, सिर्फ जस्ट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया कि नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या काम करता है रिसर्च में। फिर इसका एक सेपरेट डिटेल वीडियो हम बनाएंगे रिगार्डिंग नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और भी बहुत सारे हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे इन द स्टेप्स। नेक्स्ट क्लास में हम रिसर्च डिजाइन, सैम्पलिंग एंड डेटा कलेक्शन, इन तीनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आज के लिए आप इन तीनों का याद रखो। फर्स्ट स्टेप हमेशा आपका टू आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम, ओके, और फॉर्मुलेट ए प्रॉब्लम। डिफरेंट वर्ड से ये आपको मतलब मिलेगा, आइडेंटिफाई करना, फॉर्मुलेट करना, टू मेक अ प्रॉब्लम, ठीक है। एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे, देन डेवलपमेंट ऑफ योर वर्किंग हाइपोथेसिस। तो ये तीनों आप याद रखो, फर्स्ट 3 प्रोसीजर से। तो इसके बाद वाला जो वीडियो हम इसमें ये तीनों पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। आज हम यही एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन प्लीज गिव वन लाइक, आप कमेंट भी कर सकते हो इफ यू हैव एनी क्वेरी। कैरियर फ्लाइट ऐप है, आप उसको डाउनलोड करके वेरियस कंटेंट्स जो है उसको आप देख सकते हो। क्रैश कोर्स भी आप अवेल कर सकते हो, अगर आप दिसंबर में एग्जाम अपेयर कर रहे हो तो हमारा जो क्रैश कोर्स है यूजीसी नेट का, उसको आप ध्यान से देख सकते हो एंड डिस्काउंटेड प्राइस में है, तो आप एनरोल कर सकते हो उसमें, ठीक है, जल्द से जल्द। और यू कैन सब्सक्राइब चैनल कैरियर फ्लाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।